Friends, as a medical community, we feel unrest whenever we come across any verdict related to medical negligence. We get mixed reactions, with most showing displeasure or disbeliefs on how can one penalize a case with known complications. For some, it is only to harass doctors, since doctors are the softest targets for the society. Most of the times, the legal fight is between the medical community and the non-medicos, and we rationalize ourselves that probably they don't understand the medical technicalities, and since there is the perception of the doctors being soft targets, they are not heard and are given punishments. But friends, how many of you know that there is a case recently happened where a well-reputed surgeon has filed a medico-legal case against the reputed doctors from the same medical community? Surprised? Yes friends, it did happen. It's unfortunate, but it's true. Most of the doctors belonging to the same medical community were similarly astounded when they first knew about it. Being friendly to both the parties, it was difficult for majority to decide where, when, and how the things went wrong. And now through this video, we'll unfold each and every important details of the case, which we all doctors must know. We must know the various circumstances which led this case to come out of the confines of IMA to fall into the legal jurisdiction. We must know about this case so that we as a pledged healthcare provider learn some very important lessons related to our profession and our life. We must know about this case so that we must realize how much do we own as a medical community. So friends, before we start the video, there are few disclosures. The video is very lengthy, but it's worth watching. The video is based on true events. All the incidences and telephonic conversations are real. But since this case is in the jurisdiction, the identities are kept unanimous. The purpose is not to infamous anyone, but to let everyone know the truth. All the informations provided in the videos are fact-based with no assumptions. To understand most, we request you to go through the journey of the events. For this, first listen this case as a human being, as a patient's attendant, as if you put yourself in that situation. Then interpret the given facts as a doctor, and at last try to figure out as a medical community the probable reasons behind the mishaps and the solutions for that. So the story has few important characters. On one side is a 67-year-old patient who lives with his wife in Sheher. They have 5 daughters, 1, 2, 3, 4 and 5, in which daughter 3 and 4 are doctors trained from very reputed institutes of the country. All the daughters are married and are based at the places in India. On the other hand, there is a cardiac hospital in city which is owned by a cardiologist, Dr. Cardiac, where he works with his team, a CT-based surgeon, Dr. CTVS, an anesthetist, Dr. Cardiac Intensivist, and a pulmonologist, Dr. Pulmo. The story begins on 2nd February 2022 when the patient had an episode of chest pain. He consulted his daughters who advised him for cardiac markers. The cardiac markers were significantly elevated, signifying heart attack. The patient was asked to visit a cardiologist at his local place where he was diagnosed as having a non-ST elevated MI. He received anticoagulants for that. The patient was symptomatically better and he was advised angiography. The patient and the wife were alone in Sheher. The family consulted and it was planned to get all the treatment done at city where the third daughter, Dr. 3, was practicing as a surgeon with her husband, Dr. Neurosurgeon. On 4th February, they both came to city. Next day, his angiography was done and he was diagnosed as having a diffuse triple vessel disease and was advised CABG. Dr. CTVS was a reputed surgeon of the city working in cardiac hospital, which as name suggests and projected is a hospital with dedicated cardiac services. He was also an old friend of Dr. Neurosurgeon since their MS days and was an immediate senior of Dr. 3. The couple found that option suitable and convenient and consulted him. Dr. CTVS, following case evaluation, gave his consent for operation
and planned to admit him on 8 February 2022 with a COVID report and 2 units of blood for surgery. The COVID report was positive. Friends, if you remember, in January-February 2022, there was a third wave of COVID, which was very mild. The patient was asymptomatic, but in view of safety and as per recommendations, the case was deferred for 10 days. The family utilized that time to optimize his blood sugars and general fitness for surgery. Before admission, on the advice of Dr. CTVS, C-reactive protein was done, which was within normal limit. Dr. CTVS was convinced, thus the patient was admitted on 17 February 2022 in the cardiac hospital. At the time of admission, Dr. CTVS gave the option of minimally invasive cardiac surgery versus sternotomy, for which Dr. Neurosurgeon and Dr. 3 told that they being a non-cardiac surgeon, they don't have any idea about it. They requested Dr. CTVS to consider the patient like his own father and do whatever is safe. Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon also asked Dr. CTVS about their concern for diabetes and post-operative care, for which Dr. CTVS assured them that most of the patients with ischemic heart disease have associated diabetes and hypertension, so it's not of much concern to them. Also, they have a good team who routinely does these procedures, so he is comfortable doing surgery in cardiac hospital. Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon were fully convinced with his statement. The patient and the family were fully assured and at rest, knowing that they have handed themselves in the hand of Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon, who will do the best for them. Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon were also relaxed and comfortable. They had no knowledge of cardiac hospital, except that it provides specialized cardiac services as advocated. And they did not know anyone else except Dr. CTVS, in whom they had full trust, believing that Dr. CTVS will do his best to treat the patient like his own father. As the patient was admitted on 17 February 2022, many of his investigations were done as per the CABG package, which were all within normal limits, and the patient was considered fit for surgery with usual risk and posted for surgery the next day, that is 18th February 2022 at 9 am. On 18th February 2022, patient was shifted to pre-operative room with proper preparations. Surgery was started at around 9 to 9:30 am. Everything was going fine. The relatives were patiently waiting outside. Then around 2 to 3 pm, they received calls from OT asking for jumbo packs, plasma and more packed RBCs. हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअल में क्या ना, वो 4 प्लेटलेट चाहिए थी। आपका हॉस्पिटल हो या कहाँ पर? The components were provided to them on priority. The surgery lasted around 8 to 9 hours. Around 6 to 6:30 pm, the patient was shifted to ICU, intubated on ventilatory support. ये प्लेटलेट तो मेरा टेस्टिंग के लिए गया, अभी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और प्लाज्मा रेडी है, मैं भिजवा दूं प्लाज्मा? हाँ, प्लाज्मा भिजवा दीजिए मैम। हाँ, अभी भिजवाती हूँ। हाँ हाँ जी, बस अंकल भी आने वाले हैं और 10 मिनट में बाहर। अच्छा। It was dark by then. Dr. 3 donated the jumbo pack. She was tired. She remained at home and the other went to see the patient in post-op. Everything appeared usual as what we expect following a long surgery. Patient was intubated on ventilatory support with multiple tubes and lines. That night, the wife and the daughter 5 chose to stay in the hospital. Before going to sleep, in midnight, Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon called the ICU staff to get update of the patient's health. हेलो, हाँ जी मैम। हेलो, हाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ? नहीं मैम, नहीं। हाँ मैम, बात करा दीजिए। ड्यूटी पे हो गया? जी हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ठीक है। और कॉन्शियस हो गए? सर अवेक हुए थे, बट एक्सटुबेट कल सुबह ही करेंगे। अच्छा ठीक है, अवेक हो गए थे, फिर क्या सेडेशन दे दिया कुछ? हाँ, सेडेशन, हाँ जी, पैरालाइज करा दिया सर। अच्छा हाँ जी। चलो। अच्छा सर ना, मैं फोन करने वाला था। एक्चुअल में क्या ना, वैसे तो सब बढ़िया है, बट इनका ना HB 9.5 आया है। कह रहे थे कि भाई 1-2 यूनिट का अगर ब्लड मिल जाए तो अपना 12 के आसपास हो जाएगा। हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एक बार बोल देना, वहाँ से कोई भेज देगा, मैं रात में लगा दूंगा। रात में तो क्या, मैं ही सुबह भिजवाऊंगा। सुबह? चलो ठीक है सर। ठीक है। जी ठीक है सर। ओके सर। According to ICU staff, the patient was recovering as expected. Fully assured, the family went to sleep to get surprised with the unexpected news at around 6 to 7 am
of the patient being re-explored in the night due to hemorrhage. Most surprising was that the wife and the daughter 5, who were staying in the hospital, also didn't know about it. The news was unfortunate but not unusual, at least to Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon. Being surgeons, they also at times had to re-explore their patients. However, lack of information before ensuring the procedure was something they were not very comfortable with. Anyhow, they convinced their family, stating that they also sometimes need to explore the patients in view of safety. Possibly, the surgeon might not have found enough time to convey before reoperating, but we should have faith in him and God. At around 7:30 to 8 am, while leaving for the cardiac hospital, Dr. 3 called ICU staff for any requirement. कैसी तबीयत है? अभी आप ऑन ड्यूटी में और हाँ मैम नहीं हॉस्पिटल ही हूँ। अच्छा ओके, कैसे निकल रहे थे? बताओ, कोई ब्लड वगैरह कुछ लाना तो नहीं? मैं लेती हूँ। हाँ मैम, अगर ला सकते हैं सर, क्या 2 PRBC और 2 PRBC 2 या 4 FFP मैम, 2 तो PRBC और 2 FFP या 4 FFP। मैं बात कर लेती हूँ अभी, है ना? 2 PRBC और 4 FFP है। हाँ जी मैम। हाँ जी। प्लेटलेट प्लेटलेट ठीक है मैम। ठीक है, मैं बोल देती हूँ अभी, है ना? मैं लेकर आती हूँ। जी ठीक है मैम। Dr. 3 arranged the blood components as advised and reached the hospital by 9 am. As soon as she reached the hospital, she called the ICU staff and made a request to meet her father. She was told to come after some time. She thought probably it's around time and she came to the room. हेलो। हाँ जी मैम, बताएं। मैं कह रही मैं आ गई थी, वो ब्लड में तो टाइम लग रहा था, मैं ड्राइवर साहब को छोड़ दिया। कोई बात नहीं मैम, बस मैं मिल लूँ एक बार? बस मैं 10 मिनट में मिल लेना आप मुझे बस कॉल कर दीजिएगा जब भी हो जाए। जी मैम। ओके। Around 10 am, while her family was chanting for the health of the patient, she received an unexpected WhatsApp image of a bronchoscopy from Dr. Palmo, which amazed her. She thought probably Dr. Palmo wanted to consult her for a patient. She called him instantly. What Dr. Palmo told her made her speechless. हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं तो बढ़िया हूँ सर। वो आपने भेजी थी अभी ना ब्रोंकोस्कोपी इमेजेस? वो बंद हो गया था, लेफ्ट लंग पूरा बंद पड़ा और मुझे तो अंदर से भी काफी कुछ सूजा हुआ लग रहा था। कुछ आउटसाइड का वॉल कंप्रेशन है, तो पूरा एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो दूसरी तरह होंगे शायद मुझको सही तगड़े इस वजह से बंद हो गया था। अच्छा, खोल तो दिया। अच्छा, म्यूकस प्लग्स की वजह से था सर? हाँ, फोटो डाली तो है। हाँ। बनता और लोअर लोब और अपाइगल वाला तो 100% बनता, पूरा कंप्लीट कोलैप्स था। ओके सर, ये मतलब पल्मोनरी एडीमा की वजह से रहा होगा? म्यूकस प्लग कैसे लाइक? मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ लंग डिजीज होनी चाहिए अंडरलाइन, उसके लिए इवैल्यूएट नहीं करा हुआ आपने? अच्छा, पीएफटी वगैरह तो हो रखा था सारा? नहीं, हाँ यार, तो नहीं हुआ। नहीं, आपके यहाँ नहीं हुआ था? और मुझे किसी ने कहा भी नहीं डॉक्टर और कुछ और होना है। रूटीनली करते नहीं, कॉस्ट बढ़ती है ना। अच्छा, वैसे बताया भी नहीं, मुझे पता नहीं था। तो अभी सर कुछ करना नहीं देता कोई, तो कुछ कराते नहीं है। के बारे में तो देखो, पीएफटी भी कॉम्प्रोमाइज है, वो ठीक से होती भी नहीं है, वो तो 100% रिपोर्ट नॉन ऑथेंटिक है। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं, चाहे सर्जरी करनी हो तो दोबारा करनी पड़ती है। इसका टाइम होता है, इतने टाइम तक प्रूफ पाती है, वो टाइम एस्टिमेट नहीं है। दूसरा, ये जो मशीन है ना, ये मशीन ऐसे समझ लो जैसे ERS और ATS है ना, हमारा यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी और अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, इन सबसे एंडोज्ड होनी चाहिए मशीन। इसका जो डेटाबेस होना चाहिए, ये इनका एंडोज्ड डेटाबेस होता है, जिससे कंपेयर करता है तो वो इसका एंडोर्समेंट का ही कॉस्ट बढ़ जाती है, इस वजह से वो पीएफटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। जो एंडोर्स पीएफटी आती है, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की आती है, एचजी की चलती है, यूएस की चलती है, यूरोप की चलती है, कंपनी की चलती है, यूके की चलती है, ये सारी एंडोर्स है, पर इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। और जो इन्होंने लिए, ये टीएमटी के साथ फ्री मिलती है, नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई इसका मापदंड नहीं है, कुछ नहीं पता चलता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चलता। तो मैं बहुत ज़्यादा 0% रिलायबिलिटी है।
तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीठ का तो काम सही गया। अभी तो फिलहाल लंग का कॉम्प्लिकेशन ही था, इतना सिग्निफिकेंट क्यों आया इसका तो कोई जवाब नहीं, और आ गया। ओके ओके सर, तो अभी ओके, तो अभी कुछ और एक्सट्यूबेट कर देंगे अब। अच्छा, पल्मोनरी साइड से कुछ और अभी बस एक्टिव विजिलेंस रखना है, अगर कोई इशू होगा तब फिर से रिपीट करेंगे। पल्मोनरी एडिमा होता तो बायलैटरल होता, यूनिलैटरल पर एडिमा कभी नहीं होता है। तब होता है जब डिजीज लगो और आपने फेफड़े पे तो बंद करके खोला, जैसे हम ट्रैकोस्कोपी करते हैं, एक लंग बंद कर देते हैं, तो तब ये सारे इश्यूज आते हैं। तो वही ये मिड स्टर्नम से खोला नहीं, साइड से एक लंग बंद करके खोला है। ये कॉम्प्लिकेशन इनके पास तो बहुत ही भाई ज्यादा अच्छा है। जब से आया तब से तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई 100 पे 1 मोर्टेलिटी हुई। मतलब उसकी सर्जरी में हम लोगों का इंटरफेरेंस शायद 3 महीने 6 महीने में एक बार होता हुआ। बिल्कुल पहले तो बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। पहले तो एक डिक्टम बना रखा था भाई, पीएफटी करा लो पहले। फिर होता था पीएफटी के लक्ष्य कोई पेशेंट देगा, पैकेज में से देंगे नहीं, पैकेज ये है, बड़ी लड़ाई होती थी। फाइनली ये हुआ हमें पीएफटी नहीं करनी। तब बुलाते भी नहीं, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब अच्छी टीम है। इसमें तो कॉम्प्लिकेशन है ना, दोबारा वो खुल गया ना, वो खुलने में भी कुछ नहीं मिला, खून ही पतला रहा होगा, एसएफपी वगैरह देने में शायद मोस्ट प्रोबेबली। तो जनरलाइज्ड लूजिंग ब्लीड होता है ना, वही वाला होगा। तो इसमें तो उनको एसएफपी देने होंगे। जब भी ऐसा होता है, आईएनआर देखा नहीं होगा, आईएनआर हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा हो, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो पड़ा हो अंदर, तो इसमें सारे कॉम्प्लिकेशन देखने मिल जाते हैं। ब्लीड मिल जाएगा, इन्फेक्शन मिल जाएगा, मिल जाएगी, कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट और डिलेड जो होते हैं सर्जरी के वो आते हैं। ओके, हाँ वैसे हाई रिस्क तो है, आई अंडरस्टैंड एज ए डॉक्टर ऑल्सो, बट हाँ भाई इतना सब कुछ हो गया तो हाई रिस्क है, हाईएस्ट रिस्क मानो तो आप हो, आपके लिए इन्होंने कुछ एबनॉर्मली ज्यादा एफर्ट डाले हैं। मेरे को तो लगता नहीं है तो कोई स्कोपी करी पेशेंट 2-3 साल हो गए स्कोपी की हुए मुझे इनके तो सही। चलो होपफुली सर, थैंक यू वेरी मच। अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी तो एवरीथिंग इज फाइन। हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ हाँ बेचारे सुबह 5 बजे वो करके मिली किए हुए हो गया मैंने कहा अभी तो कर लो, ऑपरेशन तो कर लो, वेंटिलेटर में था बताना सबने को हुआ। नहीं सर, आप लोगों के एफर्ट्स हैं बिल्कुल। आई एम सो इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ यू। नहीं अरे कमाल ही कर रहे हो आप, सर्जरी करते हो तो आप अपनी टीम के साथ ही तो काम करते हो, जिसमें जो कंफर्टेबल है, जैसे कंफर्टेबल है वैसे काम करते हो, नॉर्मल है। बिल्कुल सर, हाँ हम तो सब नहीं है, कभी कभी काम आ जाती है। नहीं तो इसका काम अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मूड में 3-4 घंटे तो कहा कम से कम स्कोपी की, इतना नमाज किया, इतना पानी डाला अंदर जी, कुछ तो रेस्ट दे दो मन को, 3-4 घंटे में एक्सट्यूबेट कर देंगे। बिल्कुल सर, वैसे मैंने कहा जब भी आप कंफर्टेबल हो, किसी तरह का कुछ वो नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से कन्विंस हो तभी आप कुछ कीजिएगा। नहीं वो कर देंगे, वो बहुत जल्दी में है, ऑन द टेबल करते थे पहले तो, आया 1 घंटे में, आधे घंटे में एक्सट्यूबेट, बहुत फास्ट चीज होगी बिल्कुल। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जितना जल्दी निकाल देंगे ना उतना वेंटिलेटर रिलेटेड इश्यूज, बाकी इश्यूज से बच जाएंगे। बिल्कुल, लॉन्ग वेंटिलेशन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, निकालेंगे क्योंकि ओरिएंटेशन ठीक है, कॉन्शियसनेस ठीक है, एफर्ट ठीक है, ठीक है। Thank you. Her mind was blank. She was not getting what is happening. She found no words except to express thanks to all those extending help to her father. She then went to meet her father in ICU, who was intubated, tachycardic and running fever. Dr. CTVS was worried for tachycardia. She could see a chest X-ray in the X-ray viewer and the whole left lung was opacified. But being a non-cardiac surgeon, she was not able to understand anything. She requested Dr. CTVS to escalate the antibiotics and add antifungals if required.
Friends, through this audio, please try to appreciate the faith a patient attendant bestow to their surgeon. They surrender their patient and his faith in the hands of unknown. हेलो। हाँ मिली पापा से। हाँ मैं मिली अभी। एक्चुअली वही है ना, अभी तो क्रिटिकली मान के चलो, उनका पल्स अभी 170 आ रहा है। हाँ ठीक है। बीच में उनको एंडोस्कोपी हुआ, मेरे ख्याल से उनका एक लंग लेफ्ट साइड किया होगा, तो लेफ्ट लंग डिफ्लेट किया होगा से, तो वो इन्फ्लेट नहीं हुआ बाद में। अच्छा। तो उसकी ब्रोंकोस्कोपी वगैरह हुई, तो उसमें म्यूकस डक्ट्स थे। अच्छा। तो वो उन्होंने लवाज किया, उससे मतलब लंग थोड़ा इन्फ्लेट तो किया है, लेकिन अभी उसके बाद जैसे प्रोसीजर से पहले 130 थी पल्स, प्रोसीजर के बाद 170 हुई है, 170। अच्छा। वो थोड़ा सा एक बॉदरिंग है। 1 एम्प्यूल नॉरेट चल रहा है एट द रेट ऑफ 20 ml पर आवर। अच्छा। सैचुरेशन 95-96% चल रहा है इस वक्त। तो अभी कोई एक्टिव ब्लड लॉस तो नहीं है, लेकिन वही शायद जो प्री ऑफ हीमोग्लोबिन 13 था, अभी 9 हुआ है, 9 से 10 के बीच में है। 2 यूनिट अभी रास्ते में FFP है, वही है, उसको लगा के देख लेंगे। होपफुली उससे टैकीकार्डिया, इंट्रावस का वॉल्यूम थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन बेटर होनी चाहिए। इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा पॉसिबल हो ना तो सुबह शाम मतलब एक एज अ डॉक्टर खुद भी राउंड ले लेना, क्योंकि आप वेंटिलेटर पेशेंट देखते रहते हो ना, तो आपको ज्यादा आइडिया है। मैं तो देख ही लूंगा। हाँ मतलब सुबह शाम प्रायोरिटी पे कि कैसा चल रहा है, ओवरनाइट कैसा रहा, क्या है, तो आप खुद भी थोड़ा सा असेस कर लिया करो। अभी कुछ दिनों की बात है ना, एक बार थोड़ा सा ये वाला फेज निकल जाएगा, फिर कोई इशू नहीं है। मैं तो देख लूंगा, पर वो ये दूसरे काम में ज्यादा लड़का डालने में ठीक नहीं रहता। नहीं सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से मैंने कहा सर अगर ब्लड चढ़ाते हैं और उसके बाद भी अगर टैकीकार्डिया सेटल नहीं करता, तब उसका आंसर नहीं था। वो बोले कि अभी तो बीपी भी नहीं है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोई इस तरह की बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते इस वक्त तो। ठीक है, एक के साथ अगर 2 ब्रेन जस्ट अल्टीमेटली तो ही हैज टू डिसाइड, बट अगर कुछ भी लगता है कि कुछ और पॉसिबिलिटी है तो डिस्कस की जा सकती है। ठीक है। हाँ मेरी बात हुई थी, उससे कह रहा था ग्राफ्ट तो ठीक है। हाँ वो डिफ्यूज होगा, क्योंकि वही क्लेक्सेन भी चल रहा था और वो भी चल रहा था, तो ये सब इश्यूज तो है ही, है ना, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ नहीं वो तो है ही। तो अभी डाउन थोड़ा सा रहेगा, बस इस वक्त थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा अभी 1-2 दिन कुछ दिन विजिलेंट से रहना पड़ेगा। वो थोड़ा सा नॉर्मलसी में आ जाएंगे ना, ट्यूब्स वगैरह आउट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगी। ठीक है। हाँ ओके। हाँ By 11 a.m., Dr. CTVS called Dr. 3 and told that he is suspecting lima spasm with impending myocardial infarction because of too many procoagulants being already given to the patient. The patient needs to be urgently re-explored. That was the first time Dr. 3 became uncomfortable. She raised her concern. This patient already had 3 major interventions in last 24 hours. Each re-exploration is a gateway for sepsis. Are you sure about the second re-exploration? Sometimes operating again and again in the same patient causes thought block. It's better if you can involve some other cardiac surgeon. Dr. CTVS told, it's now or never like situation. The situation was grim. The series of conversations between Dr. Neurosurgeon and Dr. 3 may tell you how painful the situation was. हेलो। वो तो सब कर चुके हैं वो। हाँ ठीक है, और बाकी आधे पौन घंटे में वो डिसाइड करके बता देगा कि रूटीन में वो कह रहा है कि बस यही है बेस्ट पॉसिबल। एक बार मैं दोबारा देखूं चीजों को। कह रहा है 4 ग्राफ्ट लगाए मैंने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ, और टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है कि 4 ग्राफ्ट फेल हो जाए। तो कह रहा फिर भी चलो यही है कि
हम क्या कर सकते हैं वाली बात है, तो उसी में मैं एक बार और ट्राई करके देखना चाहता हूँ हाँ हाँ कि अगर पॉसिबल बॉडी करती है हेल्प तो मैं तो कर दूँ। हाँ हाँ, वो तो मामला हाँ हाँ, नहीं वो तो वो कर लेंगे, वो कर दें अभी, अगर इमरजेंसी है तो उसको रोके ना। हाँ बस यही है कि थोड़ा सा वो भी, जैसे हम भी अपने फ्रेंड्स में ओपिनियन ले लेते कि अच्छा ये क्या लग रहा है कुछ ऐसा ना, तो वो एक बार समझ। यार तुम भी एक बार बात कर लो, मैं तो बात कर चुका और उसने बोला कि कुछ हाँ ऐसा हाँ है नहीं कि हाँ, मैं क्या ओपिनियन लूँ और क्या क्या नहीं करूँ। ठीक ठीक। ठीक है, कुछ हो भी तो ना ऐसा, अब क्या लूँ। अब हाँ बाकी अब यही है कि मैं क्या बोलूँ कि दूसरे को बुला के करवा दूँ, मत कर। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं बोलना हमें, वो तो खैर ठीक है, तो लेट हिम डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या करें वो अपना बेस्ट ही करेंगे जो भी करेंगे। मामला, लेकिन मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं बताऊँ तुम्हें जिस हिसाब से बता रहा था ना, कार्डियक आउटपुट जो है आ नहीं रहा ज़्यादा ना, मॉडरेट सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा है मामला। तो क्या दिक्कत है, करें, मतलब क्या हमें मतलब क्या करें चेंज यार, करना वेट और चाहिए वॉच मैदान वेट का? इस ऐसे कंडीशन में कहाँ और कैसे चेंज और क्या होगा। ग्राफ्ट तो ठीक ही है, अब क्या करना है, तैयारी करो। हेलो। मेरी बात हुई, क्या कहते हैं अभी ना, जो थ्रू जो एनेस्थेटिस्ट है ना यहाँ पे, हाँ हाँ उनसे मैंने हाँ कहा वो हाँ एग्जैक्ट, क्योंकि वो देख भी रहे हैं सारी चीज़ें ना, एनाटॉमिक सपोर्ट रिपोर्ट के सब देख रहे हाँ होंगे हाँ वो। हाँ हाँ, कौन है एनेस्थेटिस्ट? क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ था उनकी बात इज्जत। हाँ हाँ तो उनकी बातों में तो यही था कि ग्राफ्ट सारे ठीक काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो भी बेस्ट एक सिटी के सर्जन कर सकता है वो ऑलरेडी वो करा जा रहा है, और वो मतलब उनके हिसाब से ग्राफ्ट भी सब ठीक चल रहे हैं। हाँ हाँ और कंडीशन ऐसी है नहीं कि इनको कहीं शिफ्ट करवाया जाए, और शिफ्ट कराना बेवकूफ़ी होगी, तो उनकी आपस में बात थी। मैं बोला था कि अगर घर वाले चाहें शिफ्ट करवाना तो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, तो उन्होंने शिफ्ट करवाने की तो सोचना भी नहीं, क्योंकि कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, और शिफ्ट कराना बेवकूफ़ी है, हाँ, कोई कहीं प्रॉब्लम कोई नहीं नहीं, शिफ्ट कर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा वो कह रहे थे कि ओटी में लेने के बाद देखा सब कुछ, कोई यूजिंग वूजिंग कहीं कोई ब्लीडर कुछ नहीं मिला, लेकिन एनाटॉमिक सपोर्ट कम हुआ है। अच्छा, ठीक है, एनाटॉमिक सपोर्ट कम हुआ है, तो भाई अपना तो वही है आपसे अपना। रिक्वेस्ट है, सुनो, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हाँ, 2-4 दिन थोड़ा सा अपना काम अरे कम कर। रिक्वेस्ट की क्या बात क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो यार, मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या, मुझे तो कुछ सारा अजीब सा तो बस हो रहा थोड़ा है। सा यहाँ आके देख लो कि क्या है। हाँ अब मैं, तक सब छोड़ दो, बस एक बार सर्जरी से वो रिकवर होकर आ जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। अरे ऐसे मत बोलो, मुझे खुद अच्छा ही नहीं लग तो रहा है यार, बस यहाँ पे अभी मैंने अभी मना ठीक कर हो दिया जाए। अपने, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। Each minute was important for Dr. Three. The surgical specialty was totally out of her scope to suggest any action. She had no choice, but in a desperate attempt, she started contacting all the CT-based surgeons in her knowledge. Unfortunately, all were out of reach except Dr. CTV's friend, who did his MS training with Dr. Three, and they were in contemporary batches during their super specialty training. Dr. CTVS was then working in other hospital in D City. Dr. Three explained him her father's condition and requested him to guide and further help. Luckily, Dr. CTV's friend did not have any case posted for that day, and being Saturday, his OPD was almost finished by that time. He kindly accepted the request of Dr. Three to visit her father at the earliest from D City, which was around 180 kilometers away from the city, with traffic issues at places. Though he was hesitant that Dr. CTVS must not mind, because Dr. CTVS was also once his senior during his MS training days and in CTVS training also. Dr. Three assured him to visit her patient as the capacity of her friend. In fact, she was expecting that Dr. CTVS will be more than happy to have a helping hand in this dire situation. Meanwhile, Dr. Three and Dr. Neurosurgeon were winding off their work so that they can focus on their father. Dr. Three received a call from Cardiac Hospital ICU. हेलो। हाँ मैम, हाँ आ जाइएगा एक बार नीचे, आ गए हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ठीक है, आ जाओ एक बार, आईसीयू में आ गए हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो ब्लड लेने आई थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आप वहाँ पहुँच गए हो? मुझे वाइटल्स बता दो, कैसी तबीयत है, क्या है ये बता दो। क्या वाइटल्स मिला? ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बात लो, सर से बात कर लीजिएगा मैम। हाँ। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हमने ओटी में खोल के देखा था, कोई वैसा ग्राफ्ट तो काम कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, तो एलईडी में एक ग्राफ्ट और लगा दिया मैंने। अच्छा, लगाने के बाद अभी हार्ट रेट बीपी सेटल हुआ है थोड़ा, अभी रेट 120 है, बीपी 140/60 के आसपास है।
ओटी में भी 1 घंटे में यूरिन करीब 400-500 ml आ गया है, जो पिछले 3-4 घंटे से 100-125 था बस। ठीक ठीक सर। मतलब जिस कंडीशन में ओटी से मैं लिया था उससे तो बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी आगे कैसी कंडीशन रहेगी मतलब बताना बड़ा मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड है ना। जो कर सकते थे कि हाँ हम ये चीज एक रह रही है कि अगर कुछ नहीं समझ आए तो मान के हो सकता है आपके ग्राफ में दिक्कत है। जी सर बिल्कुल। मैंने नया ग्राफ एलईडी में लगा दिया। एलईडी एक मेन वेसल है कि हाँ उसमें कुछ होगा तो शायद उसी से ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। जी सर। ओटी में मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने ब्रांच एक खोली थी लीमा की, लेकिन वो काम कर रही थी, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा ग्राफ देने से कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जी। मैंने एलईडी का ग्राफ लगा दिया है। मतलब जब भी तुम आओ तो एक बार नीचे आके मिले ना। अभी आने का है क्या? सर मैं यहाँ ब्लड लेने आई थी एक्चुअली, वो सैंपल लेके आई थी। तो फिर आओगे ही ना? हाँ सर मैं अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ 15-20 मिनट आधे घंटे में आ ही जाओगे सर। हाँ जैसे वहाँ ब्लड वो प्रोसेसिंग में है वो होता है, मैं लेकर आ जाऊंगी। तो वो तो कोई भी ले आएगा, तुम वहाँ बैठ के क्या करोगी? सर एक पेशेंट था, उसी को वो छुट्टी भी बना रही थी, मैंने कहा छुट्टी बना के। अच्छा नहीं तुम वैसे कर लो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आराम से फ्री होके आ जाओ। मैं आपकी सिस्टर को बुला के बताऊं कि क्या करूं? नहीं सर मैं ही आऊंगी। वो लोग ना और थोड़ा परेशान। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ कि वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये आई ओपनिंग टंग मूवमेंट और वो सब भी आ रहे हैं, अवेक हैं काफी। मतलब और सर इतने अवेक हैं कि हाँ की चीजें उम्मीद करते हैं कि 2-3 घंटे ठीक रहता है, तो हम एक्सटूबेशन का भी सोचें, लेकिन अभी 3-4 घंटे देखना पड़ेगा। नहीं सर आप पूरा अपना टाइम लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं जिस कंडीशन में ओटी में लिया उससे काफी बेटर है। लेकिन अब आगे का समय तो अब वो तो सर हर बार देखना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, जब तक वो नहीं हो जाते तब तक जब भी आप आओ तो मुझे बता देना। हाँ जी सर थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। Friends, as we can understand from this discussion that the patient who was taken up for surgery at around 11 am and shifted to ICU at around 1 pm, surgical team was keen for an early extubation, for which Dr. 3 was not convinced. She politely put her point also, but with full faith led Dr. CTVS to take the call. At around 4 pm, that is within 3 hours of shifting to ICU, the patient was extubated. जी मैम। हेलो हाँ बात है आपकी, आप हो गए छुट्टी हो गई अभी? मैम मैं तो निकल गया था, एक्सटूबेट तो कर दिया अंकल को, वेंटिलेटर हटा दिया उनका। अच्छा एक्सटूबेट कर दिया वेंटिलेटर? हाँ जी मैम, हाँ जी मैं एक्सटूबेट कर ही आया हूँ। अच्छा कितने 4 बजे के करीब? हाँ जी मैम, एक बार मिल लो चाहे आप। अच्छा थैंक यू। हाँ जी मैम। So relieving, isn't? Whatsoever was the crisis is now settled. The surgical team is working hard and diligently to get the things right. Ultimately, the patient is out of ventilator. The family also had a merry time. They were chatting and joking with their evening tea in the room, which was not even finished when they received an urgent call from the CTVS ICU. Your father is sinking for unknown reasons. Within 1 to 2 hours of extubating, the words of the surgical team absolutely changed. From reassurance, now they have started explaining the prognosis and the amount of hard work they have put in. Friends, with the following conversations between Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon with the blood bank in charge of own hospital, who was till that time issuing endless requests of the blood in last 48 hours without any questions, and with close medico friends, you can relate how helpless a doctor becomes when it comes to his own family member. हेलो हाँ बताओ सर, मैं वो हाल पूछने के फोन करा था मैंने। कंडीशन तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नो वेंटिलेटर तो हट गया मेरे ख्याल में, या अभी फिर वापस लिया गया? दोबारा फिर वेंटिलेटर पे दिया। और सर चलिए सर, कुछ भी जरूरत है मुझे फोन करिए रात को। ठीक है सर, मैं करा दूं। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो पापा की कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा इंट्राओटिक बैलून पंप लगा रखा है बीपी बढ़ाने के लिए। अच्छा और जो है तो फिर तो गड़बड़ बात है। बीपी, नोरेड, डोब्रेक्स और एडेनिन भी चालू कर दिया है। अच्छा हाँ, और 30 पे नोरेड चल रहा है। नोरेड भी है। हाँ एक्सुबेट हुए थे, लेकिन जो टैकीकार्डिया परचेस कर रहा था और बीपी बढ़ नहीं रहा था, तो दोबारा इंटूबेट करना पड़ा। अच्छा
ये है। फिलहाल की कंडीशन तो ठीक नहीं लग रही। तू कहाँ है? मैं यही हॉस्पिटल में ही हूँ। मैं चलाता हूँ मैं आ रहा हूँ। With passing time, the condition was getting more and more grim. The vitals were sinking in front of everyone. The heart rate of 170 per minute with anuria was causing a sense of depression to everyone. Cardiac surgery team raised their hands and non-cardiac doctors were standing with puzzled face. How to help? Everyone knew it is a matter of few minutes or maybe few hours. The cardiac team had no reason for such a gloomy outcome in an elective surgical patient to whom they cleared for surgery with usual risk following a list of in-house investigations. Dr. 3 could see the transesophageal echo machine being kept somewhere at the corner, but probably because of lack of expertise, it was never used. Dr. Cardiologist did a transthoracic echo and reported that patient's ejection fraction is less than 30%. They were now waiting blankly for the time when they can formally declare the patient dead and close the chapter. But Dr. 3 was not at ease at all. Till the last breath of the patient, she wanted to fight. She now had only one hope, that is her friend Dr. CTV's friend, who was still on his way, trying his best to reach as soon as possible against the traffic jams he was encountering. By around 7 to 8 p.m., Dr. CTV's friend managed to reach Cardiac Hospital. Dr. 3, who was miserably waiting for him at the gate, it was like a ray of hope for her. She rushed to hold his hand and bring him to the CTV's ICU, where his father was struggling for life. Dr. CTV's friend assessed the patient, who was on multiple supports, including intra-aortic balloon pump and with hypotension not responding to dopamine, dobutamine, adrenaline. He expressed his possibility of vasoplegic shock syndrome. He requested the surgical team to start vasopressin infusion as a last resort. The surgical team, including Dr. CTVS, was not very keen for vasopressin. They admitted that they have no experience of vasopressin because of its potential complications, and since they don't use it, the cardiac hospital don't keep it either. Dr. CTV's friend notified that since we don't have any other option and the patient is already sinking, this desperate attempt may give some time for us to understand and rectify the underlying issues. Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon pleaded Dr. CTVS to make the drug available and start as soon as possible. But to their distress, it was never made available. After waiting for several minutes, Dr. Neurosurgeon ultimately called their personal staff to purchase the drug from own hospital pharmacy, which was around 7 to 8 kilometers from the cardiac hospital. The drug reached cardiac hospital from own hospital, but the cardiac hospital pharmacy remained quiescent. Anyhow, following the vasopressin infusion, the vitals started showing improvement. The tachycardia started settling from 170 to 160 to 150 and so on. The pulse, which was almost thready, started bouncing. The inotropic support started weaning off. The urine output showed improvement. The cold, clammy skin again showed some warmth. The hope, which was almost lost, again rekindled in the heart of family members. It was almost midnight when gradually the doctor friends started leaving. Then left the Dr. Cardiac intensivist, then Dr. Cardiac, and lastly Dr. CTVS also left the patient, stating that his wife is alone at home with their kid. He offered Dr. CTV's friend to stay at his home. However, Dr. CTV's friend politely refused, stating that he has came to help Dr. 3 on her insistence. Let him serve the purpose he was called for. That night, in the ICU, there were 3 doctors, Dr. 3, Dr. Neurosurgeon and Dr. CTV's friend, who managed the patient overnight with the help of a semi-trained ICU staff, who would have preferred to go to sleep in the absence of intensivist supervision, since there was only one patient in the ICU whose prognosis was already explained to the attendants by the senior doctors of the hospital. The patient family slept outside the ICU, under the stairs, on the naked floor, with each breath chanting for the miraculous recovery of their loved one. The night was sleepless but full of events. Past midnight, the intra-aortic balloon pump started beeping for low battery, not charging with any of the ICU sockets. An alternate BP machine from the own hospital was then called. Later on,
It was recognized that most of the sockets of the ICU were not working and the machine was charged from the OT sockets. Besides that, due to unknown reasons, for most of the medicines the cardiac hospital pharmacy used to deny, and even the simple medicines were procured from the own hospital. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, आईपीडी फार्मेसी पे करा दो बात। एक मिनट मैम, एक मिनट जा उधर भैया पेमेंट करा दो, उधर पेमेंट तो कराओ। क्रिएटिन रिपीट करा लेंगे इसमें, सोडियम पोटेशियम क्रिएटिन वगैरह भी करवा लेते हैं सब। एलडीएच तो नहीं कराना, लैक्टेट हाँ। आईएनआर वगैरह तो नहीं कराना। और कोई इन्वेस्टिगेशन होगी क्या? एंटी फंगल फ्लूकॉन चल रही है। हाँ, फ्लूकॉन 150। हेलो नमस्ते मैम। अभी मेरी सिस्टर आएंगी और सर भी आएंगे वहाँ ब्लड बैंक में जी। ठीक है, एक मेफ्टाल की 10 गोलियां। मेफ्टाल इस पास नहीं, टैबलेट मेफ्टाल प्लस है। मेफ्टाल प्लस कौन से? मेफ्टाल 500 प्लेन। ठीक है मैम, मेफ्टाल 500 प्लेन है ना जी। 10 टैबलेट देंगे? अच्छा कोई बात नहीं, जो आ जाए पहले हम मंगा के तो रख लेंगे। हाँ वापस कर देंगे। हाँ ठीक है, तो 10 गोलियां। अच्छा चलो 5 गोलियां ये ब्लड बैंक में आएंगे। हेलो मैम, नमस्ते मैम। हाँ नमना, अर्ली डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली मेरे फादर अभी है ना, तो कई मेडिसिन हैं जो यहाँ पे इनसे मांगते हैं, ये कहते हैं हमारी फार्मेसी पे नहीं है। तो कोई है फार्मेसी? मैम आप पर्चा व्हाट्सएप करिए मैम। लेकिन किसे लिए? तो आप मुझे व्हाट्सएप। जैसे अभी क्या हुआ, एक लूज मंगाया, थोड़ी देर बाद कुछ और मंगाया, इस तरह से हो रहा है। अच्छा। तो कोई जना हो आसपास जो कि अगर यहाँ नहीं हो तो मैं उनको बोल दूं कि अच्छा आप डिलीवर कर दो। फार्मेसी में मैम, लड़का फार्मेसी में ही है, मैं फार्मेसी वाले को बोल देता हूँ, लाके दे देगा। तो आपको एक नंबर मैं सेंड कर देता हूँ, वो स्टोर वाले का है सामने कौन नाम बताओ? हाँ लड़का है, वो जानने वाला लड़का है, वो कर दिया करेगा जो भी हो, एक आइटम दे दिया करेगा जहाँ पे भी देना होगा। जैसे ना फुटकर से आ रहे हैं कि कंडीशन देख के उन्होंने कहा अच्छा लूज सिरप भी नहीं है या कुछ भी है ना, तो फिर वो कम से कम दे दे, है ना। मुझे नंबर भेज दो प्लीज। मैं भेज रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। और मैं बोल भी दे रहा हूँ उसे, बोल भी दो उसको, है ना। हाँ बिल्कुल। ओके। By morning, with the combined efforts of Dr. 3, Dr. Neurosurgeon and Dr. CTV's friend, the patient's vitals were settled enough to consider transport to a better equipped hospital. But the question was where? Who will take a complicated critical post-operative case? Through their references, Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon contacted many critical care and cardiac intensivists. They all showed their constraint and a need for the cardiac surgeon to manage the surgical part, for which no cardiac surgeon came forward. Friends, can even in your wildest dream, you can imagine yourself with your electively operated family member with post-operative complications, struggling hard to get admitted with refusal from everywhere? A nightmare for many was a reality for Dr. 3, Dr. Neurosurgeon and their family. By overnight, Dr. 3 and Dr. Neurosurgeon realized that cardiac hospital is not equipped enough to manage such type of patient. The alien behavior of the surgical team, especially Dr. CTVS, broke the trust to some extent. They ultimately pleaded Dr. CTVS' friend to take the patient under his custody. He was their last hope. Taking a critical post-operative case was not an easy decision for Dr. CTVS' friend either. That was an additional responsibility with huge chances of dismal outcome and a shifting the blame to him. It was a difficult situation for him. Open-mindedly, he did a meeting with all the family members, explaining the current situation and the high chances of failure even during transport. He assured to persuade any CTVS surgeon of the choice of the family as a help. Looking at all the available resources, family decided to move in with Dr. CTVS' friend to other hospital in D City.
Before shifting, Dr. CTV's friend asked for a chest X-ray. When requested to cardiac hospital ICU staff, Dr. 3 was told that 20th February 2022, being a Sunday, there is no X-ray technician. Dr. 3 asked them to call him, for which Dr. 3 was told that he lives far away and it is difficult to call him. The cardiac hospital, despite repeated requests, didn't arrange for even a X-ray technician for a chest X-ray, which was then again arranged from the own hospital. Hi, good morning, ma'am. हेलो हाँ गुड मॉर्निंग आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं आपको सवेरे No, not at all, ma'am. हाँ Not at all. मुझे एक हेल्प चाहिए थी आपसे वो मेरे फादर अभी वेंटिलेटरी सपोर्ट पर उनका सर्जरी हुआ था लेकिन पोस्ट ऑफ कुछ इश्यूज आए तो कल तो रात काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे तो अभी थोड़ा सा बेटर है हमें ना एक्चुअली एक एक्सरे चाहिए था आज संडे इनका जो स्टाफ है यहाँ पे वो संडे को छुट्टी पर होता है एक्सरे प्लेट उनके पास मशीन तो है लेकिन वो टेक्नीशियन नहीं है तो क्या हम भेज सकते हैं जिसको आता हो तो वो एक एक्सरे निकाल के दिखा दे हमें So you need a technician. आई नीड हाँ इनके पास बाकी एक्सरेज वगैरह मशीन तो है हाँ जी I will send the technician right away. प्लीज प्लीज थैंक यू वेरी मच उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो नहीं मैं अभी टेक्नीशियन को On 20th Feb 2022, patient was shifted from cardiac hospital at around 10 to 11 am to other hospital in D city. Despite the patient remaining admitted under their care, neither Dr. CTVS nor Dr. Cardiac Intensivist ever attended the patient once they left him in the night. At the time of discharge, he had already sustained the multi-organ damage with liver, renal, respiratory dysfunction and hypoxic ischemic encephalopathy. The patient was shifted to other hospital in D city. His treatment was started immediately. Initially, he showed some response. The patient's support started tapering. However, as apprehended, within 3 to 4 days of primary surgery, the patient developed non-responsive septicemia. The patient again started deteriorating. The family understood the prognosis and decided to shift the patient to own hospital in the city for the palliative care. On 1st March 2022, the patient was shifted to own hospital in city. Till the last breath of the patient, Dr. T tried her best in consultation with various other specialists, trying ways to reduce the septic load. But the patient, after his long and desperate fight for life, ultimately expired on 3rd March 2022, that is within 2 weeks of the primary surgery. A sad ending, isn't? No friends, it is not an ending. Please wake up the doctor inside you to understand what has happened.